हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको टू पोर्ट नेटवर्क के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, which is the y parameters of a two port network are. Y parameter की value is 5312 Siemens. A resistor of 1 ohm is connected across as shown in the figure below. The new y parameter would be. It means यहाँ पे क्या है कि हमें एक नेटवर्क गिवन है जिसका ऑलरेडी y पैरामीटर गिवन है, एंड उसके पैरेलल में एक अनदर नेटवर्क कनेक्टेड है विच इज़ ओनली कंसिस्टिंग ऑफ अ रेसिस्टर ऑफ 1 ohm. इस ओवरऑल नेटवर्क के लिए हमें उसका y पैरामीटर फाइंड आउट करना है. So we can see that the given network, it is parallel interconnection. So this is parallel interconnection. Okay, and we know that in parallel interconnection we can easily find the y parameter for the overall network. So जो y parameter होगा, it will be y of a summation, दैट इज नेटवर्क ए के लिए जो वाई पैरामीटर मैट्रिक्स है एंड नेटवर्क बी का जो वाई पैरामीटर मैट्रिक्स है, वी विल ऐड बोथ द मैट्रिक्स. तो हमें ओवरऑल नेटवर्क के लिए जो वाई पैरामीटर है वो मिलेगा. तो यहाँ पे सपोज दिस इज नेटवर्क ए, दैट इज एन ऑफ ए, उसके लिए ऑलरेडी वाई पैरामीटर मैट्रिक्स गिवन है, एंड नेटवर्क बी इज 1 ohm रेसिस्टेंस. सो दिस इज नेटवर्क बी. ओके, सो इट मीन्स फॉर दिस नेटवर्क वी हैव टू कैलकुलेट वाई पैरामीटर, दैट इज वी हैव टू फाइंड वाई ऑफ बी. ओके, so already y of a is given. So as y of a, that is y parameter matrix for the network A is given, which is 5312 in Siemens. So now let us find the y of B for the network B. So let us draw network B. So network B has only 1 ohm resistance. Okay, so this is 1 ohm resistance. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर हमें वाई पैरामीटर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, अगर पाई रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो डायरेक्टली हम उसका वाई पैरामीटर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, कोई भी शंट ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इट इज़ ओपन. अगर ओपन सर्किट है, इट मीन्स हाउ मच इम्पिडेंस वैल्यू इज प्रेजेंट. एज इट इज़ ओपन, इम्पिडेंस वैल्यू इज infinity, and admittance value is, that is y is 1 by infinity, which is 0. Similarly this is also open, so what is z? Z value is infinity and y value is 0. So now we can, as it is pi representation, अगर pi representation है तो हम उसका डायरेक्टली y पैरामीटर मैट्रिक्स लिख सकते हैं. It's y of b, that is y parameter for the network B. This is network B. Okay, so it is y11, y12, y21 and y22. This is equal to, what is y11? मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, which is y1 plus y2. y12 is minus of y2, y21 is minus of y2, and y22 is y2 plus y3. So what is y1, y2, y3? So this is shunt branch, this is y1, this is y2. So हमें इसकी admittance चाहिए, so 1 ohm, this is impedance. So if you find the admittance, it will be equal to 1 Siemens only, and this is y of 3. Okay, so y1 is 0, y2 is 1 and y3 is 0. So let us substitute here. This is 1 minus of 1 minus 1 and 1 plus 0 is again 1. So y of b भी मिल गया हमें, and y of a already क्वेश्चन में given है. So the y parameter matrix for the overall network, it will be equal to y of a plus y of b. So y of a is 5312 and y of b is this. So let us find out. This is equal to, the y parameter, it is equal to y of a value is 5312 and y of b is 1 minus of 1 minus 1 and 1. So we can simplify this. It will be equal to 5 plus 1 is 6, 3 minus 1 is 2, 1 minus 1 is 0 and 2 plus 1 is 3. So this is the y parameter matrix for the given network 6203, that is option B is correct. Okay, let us see next question.
A two-port network having the Z parameters Z11, Z12, Z21 and Z of 22 is terminated in a load impedance Z of L as shown in the figure. The input impedance Zin of the two-port network is, so यहाँ पे क्या है, एक two-port network है, so and output port it is terminated by a load impedance of value ZL. It means यहाँ पे क्या है, पोर्ट 2 पे एक उन्होंने impedance कनेक्ट कर रखा, that is Z of L, and we have to calculate input impedance. So input port की जो voltage है that is V1 and current is I1. Similarly this is port 2, that is output port, so इसकी जो voltage है that is V2 and current is I2. So as टू पोर्ट नेटवर्क के लिए ऑलरेडी जेड पैरामीटर गिवन है एंड वैल्यू इज Z11, Z12, Z21 एंड Z22. सो वी कैन राइट दी जेड पैरामीटर इक्वेशन. सो इट विल बी इक्वल टू V1, इट इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, बिकॉज वी नो दैट in Z parameter V1 is a function of I1 and I2. Similarly V2 is also a function of I1 and I2. So this will be equal to Z21 I1 plus Z of 22 into I2. So suppose this is equation 1 and this is equation 2. So हमें इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम दी पोर्ट 1. सो इनपुट इम्पिडेंस इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट दैट इज़ V1 by I1. So if we see equation 1, then V1 is a function of I1 and I2. It means we have to find out I2 in terms of V1 and I1. So कैसे हमें I2 मिलेगा? So we have to see at port 2. So यहाँ पे क्या है कि जो V2 है it is a voltage across the load impedance Z of L. So current इस network में enter कर रहा है, then this current it will leave from here, so this is entering from here, so this is positive and negative. It means जो polarity है that is opposite. So as V2 is the voltage across the load impedance, so जो sign है वो opposite है, that is minus of Z of L into I2. Okay, so let us substitute the value of V2 which is equal to minus of ZL into I2 in equation 2, because अगर हम equation 2 में V2 की value put करेंगे then it will be a function of I1 and I2 variable. तो वहाँ से हम I2 की value find out कर सकते हैं in terms of I1. So let us substitute. So put V2 value in equation 2. Okay, so in equation 2, so equation 2 is V of 2 it is equal to Z21 I1 plus Z of 22 into I2. So V2 value we have obtained as minus of Z of L into I2, it is equal to Z21 I1 plus Z of 22 into I2. So from here we can take I2 common, so let us take minus of I2 common, so this will be equal to Z of L plus Z of 22, it is equal to Z21 I1. So from here we are getting the value of I2, it is equal to minus of Z21 divided by Z of L plus Z of 22 into I1 current. So now हमें I1 मिल गया in terms of I2 मिल गया in terms of I1. So we will substitute this value of I2 in equation 1. Okay, so put I2 in equation 1. So let me solve here. So equation 1 is V1 it is equal to Z11 I1 plus Z12 and I2. So what is I2? That is minus of Z21 divided by Z of L plus Z of 22 into I1. So V1 it is equal to, so we can take I1 common, so this will be equal to Z11 minus of Z12 Z21 divided by Z of L plus Z of 22, and we have taken I1 common. So we have to calculate the input impedance, so which is equal to V1 by I1, which is equal to Z11 minus of Z12 Z21 divided by Z of L plus Z of 22. So this is the answer and it is matching with the option. So option Z11 minus option 1 is correct. Okay, that is A. Now let us see next question. The T parameters of a two-port network are, so T parameter is already given, that is ABCD parameter given.
value is given, that is A value is 2, B value is 1, C value is 1 and D value is also 1. If two such two port network are cascaded means they are connected in series. Okay, so जो network 1 है या network A है उसका जो output होगा that will be the input for the network B. Okay, so we have to calculate the Z parameter for the cascaded network. So overall network के लिए हमें Z parameter matrix find out करना है in this question. So suppose this is two port network A. Okay, so this is network A and it is connected in cascade with another network and both the network are same. It means this is also network A because it is said that two such network means both the network are identical. Okay, so now overall network के लिए we have to find out the Z parameter. So I have told you that it is cascade connection. Okay, so this is cascaded network and we know that in case of cascaded network the T, we can find the T parameter for the overall network which is T of A into T of B. So यहाँ पे क्या है कि जो दोनों नेटवर्क हैं वो आइडेंटिकल हैं, so उनके जो T पैरामीटर होंगे it will be same, that is T of A into T of A. So T of A is already given which is, so value is 2, 1, 1 and 1 and again it will be multiplied with the same matrix. So we are getting, so this is 2 into 2 that is 4 plus 1 that is 5. Okay, and this is 2 plus 1 is 3 and this is 1 into 2 is 2 plus 1 is again 3 and this is equal to, so last element is 1 into 1 plus 1, so this is 2. So it means इस कैस्केडेड नेटवर्क के लिए हमें ओवरऑल टी पैरामीटर मिल गया विच इज़ 5332, बट वी हैव टू कैलकुलेट द जेड पैरामीटर. सो द टी पैरामीटर वी हैव कैलकुलेटेड एज 5, 3, 3 and 2. Now we have to find out the Z parameter. So we know that in case of T parameter V1 it is equal to 5, that is V1 and I1 it is a function of V2 and minus of I2. So V1 it is equal to 5 V2 minus of 3 into I2 and I1 it is equal to 3 V2 minus of 2 into I2. Okay, I hope you remember. So let me write. So in case of T parameter V1 and I1 it is equal to, T parameter is 5, 3, 3 and 2 and it is a function of V2 and minus of I2. So अगर आप इस मैट्रिक्स को expand करेंगे then you will be getting the same equation, that is V1 it is equal to 5 V2 minus of 3 into I2 and I1 it is equal to 3 V2 minus of 2 into I2. So suppose this is equation 1 and equation 2. So हमें Z parameter चाहिए and we know that in case of Z parameter V1 and V2, so V1 and V2 it is a function of I1 and I2. So if we see equation 2, so यहाँ पे क्या है कि जो V2 है it can become a function of I1 and I2. So using equation 2 हम उसको थोड़ा rearrange कर सकते हैं, then we are getting 3V2 it is equal to I1 plus 2 into I2, that is V2 it will be equal to 1 by 3 of I1 plus 2 by 3 of I2. So यहाँ पे जो V2 है it has become a function of I1 and I2. So now this will suppose equation B. Now we will put V2 value in equation 1. Okay, so let us substitute V2 value in equation. So substitute V2 value in equation 1. Okay, so equation 1 is V1 it is equal to 5 into V2. So V1 it is equal to 5 into V2. So V2 value is 1 by 3 of I1 plus 2 by 3 of I2 minus of 3 into I2. So we can simplify this. So it will be equal to 5 by 3 of I1 plus 10 by 3 of I2 minus of 3 into I2. So V1 it will be equal to 5 by 3 of I1 and this is 10 minus of 9, that is 1 by 3 of I2. So now V1 जो है it is a function of I1 and I2 variable. So this is suppose equation A. So we can write
both the equation. So using equation A and B, we can develop the matrix that is v1 and v2. It will be equal to, so what is the coefficient of I1? So this is 5 by 3, 1 by 3, and in the equation B the coefficient of I1 is 1 by 3 and coefficient of I2 is 2 by 3. So this will be equal to 1 by 3 and this is 2 by 3, and it is a function of I1 and I2. Okay, so if we compare, we are getting the Z parameter matrix for this network as 5 by 3, 1 by 3, 1 by 3 and 2 by 3. Okay, so unit is ohm, and this is matching with option 5 by 3, 1 by 3, 1 by 3 and 2 by 3 is option. So option C is correct. Okay, now let us see next question. So question is, for the two-port network shown below, the admittance parameter matrix, that is we have to find out Y parameter matrix for this network. So अगर हम इस network को देखें, then we can say that जो नीचे है that is 2 ohm, 1 ohm and 1 by 2. Suppose this is network B. Okay, so we can say this is network B and this is network A, which is consisting of a T network. So यहाँ पे क्या है, ये T फॉर्म कर रहा है. So this is network, suppose this is network A and this is forming a pi representation, and suppose this is network B. And if we see both the network, so input port जो है वो क्या है, parallelly connected है. Similarly जो output port है, it is also connected in parallel. So it means it is a question of parallel interconnection. Okay, so because input port जो है वो parallel में connected है and output port is also connected in parallel, so it is a question of parallel interconnection. So we know that in case of parallel interconnection, so जो overall y parameter है this network का, it is y of a. It means network A के लिए उसका y parameter matrix form करेंगे and similarly network B के लिए उसका y parameter matrix form करेंगे, दोनों को add करेंगे तो overall जो network है उसका हमें y parameter मिल जाएगा. So let us start with the network A. So जो network A है, it is consisting of a T network and value is 2 ohm, 1 ohm and 1 ohm. Okay, so let us start for the network A. So यहाँ पे क्या है कि एक T representation given है, this is 2 ohm, this is 1 ohm and this is also 1 ohm. Okay, so 2 ohm, 1 ohm and this is 1 ohm. So now this is T representation. Okay, so ऑलरेडी क्या है, टी रिप्रेजेंटेशन गिवन है. सो अगर टी रिप्रेजेंटेशन गिवन है, सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैन डायरेक्टली राइट इट्स जेड पैरामीटर मैट्रिक्स. सो नेटवर्क ए के लिए जो उसका जेड पैरामीटर मैट्रिक्स है, दैट इज जेड ऑफ ए. इट इज़ इक्वल टू Z11, Z12, Z21 and Z of 22. Okay, so what is Z11? So Z11 is, so suppose this is Z1, this is Z of 2 and this is Z of 3. So Z11 it is Z1 plus Z of 2 and Z12 is equal to Z21, it is Z of 2 and Z of 22 value is Z2 plus Z of 3. Okay, so it means Z of A we are getting, so 2 plus 1 is 3, 1, 1 and this is 2. So this is Z of A, but यहाँ पे हमें क्या है, Y of A find out करना है. So we know the relation between Y and Z. So जो Y of A है, it is obtained by taking the inverse of Z of A, and inverse it is adjoint of Z of A divided by determinant of Z. Okay, लेट मी डिवाइड. सो यहाँ पे क्या है कि जो Z ऑफ A मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 1. सो इट इज इक्वल टू 3 that is 6 minus of 2, sorry 6 minus 1. So this is 6 minus 1. So determinant of Z we are getting 5. Okay, so Y of A it is equal to 1 by 5 एंड मैंने आपको बताया था 2 क्रॉस
टू मैट्रिक्स के लिए हाउ टू कैलकुलेट द एडजॉइंट. सो दिस इज जेड ऑफ ए. सो अगर हम उसके एडजॉइंट कैलकुलेट करना है देन सिंपल शॉर्टकट इज मेन डायगोनल की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर देंगे एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देंगे. दैट इज इट इज़ -1 एंड -1. सो दिस इज y of a. So y of a value is 2/5. Okay, let me write here. So we have obtained y of a matrix which is 2/5. Then y12 is minus of 1/5 and -1/5 and then 3/5. So this is equal to minus of 1/5 minus of 1/5 and this is 3/5. तो हमें वाई ए तो मिल गया. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वाई ऑफ बी. ओके, सो वाई बी जो है वो नेटवर्क बी से मिलेगा. सो जो नेटवर्क बी है उसमें क्या है, पाई रिप्रेजेंटेशन है एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ohm 2 and 1/2. Okay, so let us solve for the network B. So network B is consisting of a pi representation. Okay, so this is pi representation and value is, so this is 1 ohm, this is 2 ohm and this is 1/2 ohm. So दिस इज पाई रिप्रेजेंटेशन. तो अगर पाई रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो हम उसका डायरेक्टली वाई पैरामीटर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली फॉर्म वाई ऑफ बी मैट्रिक्स विच इज y11, y12, y21 and y of 22. Okay, so what is y11? It is y1 plus y of 2 minus of y2 minus y2 and this is y2 plus y of 3. So what is y1, y2 and y3? So जो शंट ब्रांच है उसकी हमें y of 1 दैट इज y1. सो यहाँ पे क्या है, हमें इम्पिडेंस गिवन है तो एडमिटेंस चाहिए तो वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल. सो दिस इज 1 सीमेन. ओके, सो दिस इज 1 सीमेन एंड इसकी जो एडमिटेंस वैल्यू है इट इज़ 1/2 सीमेन एंड फॉर दिस ब्रांच द एडमिटेंस वैल्यू इज 2 सीमेन. ओके, सो y1 is 1, y2 is 1/2 and y3 is 2. So this will be equal to, so y of b it will be equal to, this is 1 plus 1/2 minus of 1/2 minus of 1/2 and this is 1/2 plus 2. So this will be equal to, this is 3/2 minus of 1/2 minus 1/2 and this is 5/2. Okay, so हमें YA भी मिल गया, YB भी मिल गया. So now we will add both the values and we will get the Y parameter matrix for the overall network. So y it is equal to, so what is y of a? So y of a we have obtained as y of a is 2/5 minus 1/5 minus 1/5 and 3/5. Okay, so it is 2/5 minus of 1/5 minus 1/5 and 3/5 plus y of b. Okay, so y of b is 3/2 minus of 1/2 minus 1/2 and 5/2. Okay, so this is 3/2 minus of 1/2 minus of 1/2 and this is 5/2. Okay, so this will be equal to 2/5 plus 3/2 minus of 1/5 minus of 1/2 minus of 1/5 minus of 1/2 and 3/5 plus 5/2. So this is equal to, so we can take LCM, it is 10 and this is 4 plus and this is 15. Similarly for y12 LCM is again 10, this is minus of 2 minus of 5 and again here LCM is 10, this is minus 2 minus 5 and y22 LCM is 10 and this is 6 plus and this is 25. Okay, so जो y parameter matrix है for the overall network we have obtained as, so 4 plus 15 is 19/10 and this is minus of 7/10, this is also minus 7/10
and this is 31/10. So this is matching with option 19/10 -7 -7 31/10. So option B is correct. Okay, so let us see last question. Question is, find the y parameters for of the two port in the figure. So यहाँ पे क्या है, two port network given है and y parameter matrix we have to find out. So suppose this is this 4s minus of j2 and minus j2. Suppose this is one network which is suppose n of a. Okay, na is network a. Okay, so this is suppose network a and this is another network which is suppose n of b. Okay, so both network a and network b, it is पाई रिप्रेजेंटेटेड नेटवर्क, बिकॉज क्या है, पाई की फॉर्म में है एंड इनपुट पोर्ट जो है वो क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है एंड आउटपुट पोर्ट इज आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन. सो अगेन अगर पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन है देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स वाई पैरामीटर मैट्रिक्स. सो जो ओवरऑल वाई पैरामीटर मैट्रिक्स होगा इट इज़ वाई ऑफ ए, दैट इज़ नेटवर्क ए के लिए हम उसका वाई पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे. सिमिलरली नेटवर्क बी के लिए उसका वाई पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे एंड देन वी विल ऐड बोथ दी वाई पैरामीटर्स. सो सबसे पहले नेटवर्क ए देख लेते हैं. सो यहाँ पे क्या है, एक पाई रिप्रेजेंटेशन गिवन है एंड वैल्यू इज माइनस ऑफ j2. सो यहाँ पे आप देखेंगे जो वैल्यू गिवन है ऑलरेडी उनके यूनिट्स जो हैं वो सीमेंस में है. इट मीन्स आपको एडमिटेंस ही गिवन है, आपको कन्वर्ट नहीं करना. ओके, सो वी विल डायरेक्टली टेक द वैल्यू. सो लेट अस फर्स्ट टेक नेटवर्क ए. वैल्यूज आर माइनस ऑफ j2 4 सीमेन एंड माइनस ऑफ j6. ओके, सो नेटवर्क ए के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड इट इज़ गिवन. सो यहाँ पे conductance value is 4 Siemens and here inductor is present and inductor value is, and here also inductor is present and value is, let me cross check, I think it was minus j2 and minus of j6. Okay, so this is minus of j2 Siemens and this is minus j6 Siemens. सो आप यूनिट देख के पता लगा सकते हैं कि आपको इम्पिडेंस गिवन है कि एडमिटेंस गिवन है. तो अगर हम वाई पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो वाई पैरामीटर दैट इज एडमिटेंस वैल्यूज ही होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज पाई रिप्रेजेंटेशन. सो अगर पाई रिप्रेजेंटेशन है देन वी कैन डायरेक्टली राइट वाई ऑफ ए. सो इट विल बी इक्वल टू y11 y12 y21 and y of 2 2. So this will be equal to y1 plus y2 minus of y2 minus y2 and y2 plus y of 3. So what is y1? So this is y1, this is y2 and this is y3. So y of a, it will be equal to y1 is minus of j2 plus 4 minus y2 is minus 4 and this is 4 minus of j6. So this can be written as 4 minus of j2 minus 4 and this is 4 minus of j6. तो हमें ya मिल गया. Now we will find y of b. Suppose this is equation 1. Okay, now let us find yb for the network b. So network b again pi representation given है and value is 2 Siemens 4 j4 and 3 Siemens. Okay, so now we are solving for the network b and again pi representation given है. So यहाँ पे we were having a capacitor and here we were having a conductance and here also I think conductance was there. Okay, let me check. Okay, 2 Siemens 3 Siemens and j4. So this is 2 Siemens, this is j4 Siemens and this is 3 Siemens. Okay, it means conductance value is given. So this is y1 y2 and y3. So जो y of b है it will be equal to y11 y12 y21 and y of 2 2. So this will be equal to y1 plus y2 because this is
पाई रिप्रेजेंटेशन। सो अगर पाई रिप्रेजेंटेशन है तो डायरेक्टली हम उसका वाई पैरामीटर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ओके, this is minus of y2 minus of y2 and this is y2 plus y of 3. So this will be equal to, that is 2 plus j4 minus of j4 minus of j4 and this is 3 plus j4. So this is y of b. Now we have to add this equation 1 and equation 2. सो गिवन नेटवर्क के लिए जो वाई पैरामीटर है दैट इज़ वाई ऑफ ए प्लस वाई ऑफ बी. इट मीन्स वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1. सो व्हाट इज़ वाई ऑफ ए? सो वाई ऑफ ए इज़ 4 minus j2 minus 4 minus 4 and 4 minus of j6. So this is y of a and it is 4 minus of j2 minus of 4 minus of 4 and 4 minus of j6 plus, and y of b is 2 plus j4 minus j4 minus j4 and 3 plus j4. Okay, so this is 2 plus j4 minus of j4 minus of j4 and 3 plus j4. So y parameter, it will be equal to, so 4 plus 2 is 6 plus j2, this is minus 4 minus of j4 and this is minus 4 minus of j4, and last entry y22 is 4 plus 3 that is 7 minus of j2. so y parameter है तो यूनिट क्या है, सीमेंस होगी. तो ऑप्शन, so options are not given, so this is the answer only. Okay, so this is the y parameter matrix for the given network. so आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में we will start unit 5. so वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.